Hello friends, welcome to the live class of Creative Edge, one of the subsidiaries of Top Rankers. My name is Rajendra Bhatia and today I am going to talk about some previous year question, and in actual I will like to solve them for you. Last year NID had a very typical question. One, it was a natural 3-point perspective, and the second part, it was an unnatural poster making from the same subject. So let's look into it and go one by one. I'm sure there will be something interesting in the last, and you are going to appreciate both our approach as well as our way of teaching the drawing part, the drawing section of NID exam. Let's first look into the question 2 of last year, 2024. A crow is watching a juice shop in a market. Draw the juice shop from the crow's point of view. Now there are two catch. One, you have to show the market and you have to show the juice shop. Many of my friends, they made a mistake of doing only the juice shop and they did not do anything in for the market, and you lose marks, points, if you really miss out one of the major sections. The other part of this question was draw a poster for the crow to be allowed to drink juice from the shop. So here you had to have the shop and crow drinking juice having taken from the shop. So let us do it today and let's find out how to really approach such questions. Right friends, ready? I'm doing it on a bigger format just to make the sketch visible and for you to notice every nook and corner of the sketch. Otherwise in the exam you get half the A4 sheet, that is you get A5 sheet or A5 space to do such sketches. Look into the approach that I will be having for such question. Firstly, what I have understood, crow is a bird, and quite naturally what is commonly used by all of us, it is going to be a bird's view. So the horizon is going to be a little away from, maybe for learning purpose I am bringing the horizon within the paper, although you can assume it to be out of the paper. Then line of a station, it could be like this. And since it is a bird's view, you will have one vanishing point, maybe somewhere here. Line of a station, LOS. This is vanishing point of Nadir.
Now, neither you don't think that it is an Urdu word, neither is an English word here. Let's have the base created for the marketplace. This is the juice shop. I am purposely taking it into the center of the paper. And since you have to create a market scene, you have to have other shops also. Remember, first setting up of the sketch, although I am doing them very systematically, many of the market is not that systematic arrangement of the shop. This little crooked area, you are finding it only because I am trying to accommodate everything within the sheet. The vanishing point in front, it is not that of the zenith. Remember, this vanishing point is what you get in front of where the crow is flying. Okay? Or this is the central vanishing point. Let us assume that this is a corporation market, so everything is in order and well organized market.
So once you have organized the blank space with some elements, you can kind of darken them. We put a couple of human figure to make it look realistic. Place a couple of cars here. I hope you are doing it along with me so that you try to understand the difficult areas and difficulty in drawing and how to ease it out.
When you got established vanishing point, you can expect very good result of your sketching. This is a showroom near the juice center. This is that couple of garbage containers. There may be a tea stall here, or let it be a general store. Some kind of a showroom. Let us make this as a tea stall. On the tea stall we have couple of people.
although there is no such big plantation among market, but let us take it for advantage that people are aware and they are planting a lot of trees around. So that gives us a chance to fill up the space. So the commonest thing that you can expect in an NID questionnaire is a scene creation. Today I will additionally give you, after the two question, today I am going to give you an additional learning towards human figure, or in case I miss it out today, maybe we will have it in my next lecture on 28th, next live on 28th of November. So don't miss out all this part. Even the pole on the roadside would look like this, a little crooked, little inclined, because of your position and the perspective. See the difference? A person walking on this footpath would read the things over here, and person walking here would read the things over there. So that's about market scene. Once you have done it, I expect you to do a little shading on some of the areas to make the thing more clear and visible. But do not waste too much of time in shading alone.
lay down your pencil, and with oblique hatching you can shade the things up. A little quick thinking about how the market would look like. I have taken a barber shop, a tailor shop, the juice center, which is the center of attraction. That's why it has been taken up in the center also. Then general store, tea stall, etc. Lines, when you're sketching, the line should be very firm and not broken line. You should have definite lines. And single line sketch, in the sense the doubling of the line is not good. The one I did, this is a mistake. This is good. So single line is sketch everywhere. A little darkening of things at some places would give a little extra attraction. Now, although I have mentioned here vanishing point of Nadir, you may leave it like this only, so the examiner come to know that you have got that knowledge of what you are doing as a perspective. This shop is closed. I think this is good enough. I am signing it, you don't sign it during the exam. So this is about market scene and a juice center from a crow's point of view. Okay? In this situation, you may as well think that the crow is flying.
I'm looking into question. There are no question. Fine. So I think most of you are liking it. Still, you are welcome to put your question directly to me here, or any query regarding our courses and all that. You can send it across to us on 6363 286363. I'll be bringing a flyer in between, but remember, this is not ending here. I'm going to have another question solved for you, or rather the B part of this question of 2024. A Jew shop and market from a crow's point of view. Now this is what I have written, but again in examination you abstain from writing on the sketch. I'm bringing a flyer here, and then we go ahead with the second question, or the second part of the question. Let me announce that we will be having shortly a fast track batch for preparing for UCEED, NID and NIFT. 2-hour live online classes, intense session for fast syllabus coverage, weekly mentorship for doubt solving and strategy tips, 10 plus mock tests. In fact, we will be giving 15 mock tests with video analysis, detailed performance feedback, full digital plus printed study material. Batch starting soon. You can enroll yourself on 6363286363. Okay, so let us come on to the B part of the same year question. Draw a poster for the crow to be allowed to drink juice from the shop. What do you notice? Drinking juice and shop. And of course, crow drinking the juice. Let us get on with that. So let's have again horizon. Maybe I take the horizon again, assuming that the crow has taken juice from the juice center and has taken it on a tree on which the crow is sitting. So as usual, as I tell you all the time when you are starting your sketch, have these two lines established. One is the horizon or the eye level, and the other is line of station. Line of station is a vertical line on your picture frame which indicate where the viewer is present. And wherever the line of station intersect the horizon, that becomes a natural vanishing point. Natural vanishing point.
This is the place for the hero to settle down. Think that this is the same level. That means the eye level.
Now here you will be required to do a lot of shading skill as well. I mean required to have a lot of shading skill. Generally NID asks you to do the full sketch only in black and white. So you don't worry about the colors and all that. But your sketch should be pretty explanatory by itself. One formula that I have used here is to sketch the front side first. So you least have to really bother about erasing.
Now this much of the portion deserve to be shaded well, because it is from here that you are watching it. The fast way of doing shading is to lay down your pencil. It should be dark enough the pencil should be dark enough. That's where. Now this is half. Maybe you can care to take, bring a lemon here.
But what about showing the juice center? That is also important. Ice cubes. Again, you should not be signing in the examination hall. This is complete, but one small and very important thing left out. This is a poster. Remember, this is a poster. So, you should have a caption or a tagline here. Let Crow enjoy juice. It's there. THEIR, their birthright. Don't leave your answer without a caption. Yes, this was only for my part of teaching that I brought an horizon line of station. That may not be the part of this poster making. So what we have done today, friends,
two important part of one question of last year. I'm sure you enjoyed it as much as I did. Just look into the two things that I showed you one by one. A full market with highlight on the juice center. Do not write the part of the question. This is only for learning purpose here, that I have brought in a juice shop and market from a crow's point of view. But yes, vanishing point in Nadir, for all the lines to be coinciding with the vanishing point in Nadir, little shading, and a poster along with the tagline, "Let crow enjoy juice, it is their birthright." Against a question, draw a poster for the crow to be allowed to drink juice from the shop. To remind you, very shortly we are coming up with fast track batch for UCEED, NID and NIFT. I'm sure you would like to join us, so you can enroll yourself on 6363286363. Batches are starting very shortly. Date will be announced very shortly. Keep following us on www.toprankers.com or creativeedge.com. Right, friends? Your questions are welcome. Varun asking, sir, if 5-point perspective sketch बताओ ना, 5-point sketch. चलो, अगर कोई question होगा, because I mainly taken PYQ in this series of my lecture, so I'll be more focusing on to the previous year questions, either of the NID or maybe of UCEED also. But I'll try to make you understand 5-point 5-point sketch in my next lecture. I'll show you how to approach with that. There is another asking if I can solve question of 2022. I'll see to it. No promises. I'll work out my things and let you know. Okay, friends. Thank you very much for being with me. You can send your question. I'm sure you have already subscribed my channel and that's how you are looking into it. अगर नहीं करा है तो आप तुरंत सब्सक्राइब करो. आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट वी आर शॉर्टली रीचिंग 75,000 subscriber, and that's indeed the leading design coaching institute. There are other questions like 5-point lizard view कैसा बनेगा. Right, I have noticed your suggestion and your question. I will be back with you day after tomorrow, 28th. And I'll try to give you some more good news as regarding my working with the solution to the questions are concerned. Thank you very much.
आधे घंटे में एक ह्यूमन फिगर बता देता. हाँ, ये क्वेश्चंस के रिप्लाई भी दे सकते हो सर आप. हाँ कर दीजिए. मैं स्टेप Friends, I am back with the live, and I have got now the main reason why I have come back are some of the interesting questions asked by some of you. So I would like to give some of the answer, and as a bonus to you attending me in continuation, I would like to give answer to one of repetitively asked question, and that is how to adjust a human figure in a composition. So both the things, firstly let me take up the question one by one. One of interesting question asked here is, if an ant is on the tree, then will it be made in a bird's eye view or not? Yes, you are absolutely right. If an ant is on a tree and is looking downward, it will be made in a bird's eye view, or the way we have just now solved this question. In fact, one of the architecture entrance examination NATA, they actually had this question that an ant was left out or left on the woodwork of a kite, and that kite flies off into sky. What will be the scene once the ant has reached on top of the, once the ant is flying along with the kite? So you have to naturally convert the ant view, or so to say that view, into a bird's eye view. Then there is Pragya asking exactly in the same question, if the lizard is not on the ground level. Lizard is never on the ground. 99% it is on the wall or somewhere up. So will it be same like the bird's view? Yes, it will be same as bird's view. Just the image of the lizard on your side wall, then you're going to know what I'm exactly talking about, but can't able to explain. Let me tell you something interesting about this. This is getting a lot of query into it. Let me explain it with my sketch. Any animal which has got a bulged out eye. Let's say that this is the head of the lizard and has got a bulged out eye. Now this is not a bird eye. This is a bulged eye. So will you mind if I say that it will be a 5-point perspective?
but how and how to adjust it. Let me show you. Now, instead of you going further in detail of discussion, firstly look into what I am trying to explain to you with the sketch. Generally, 5-point view, we think that it is all 5-point visible. But the view with the lizard would be very different. As I just now showed you, the lizard eye is like this, and it will be able to see only a little portion in 5-point perspective. Here it will be like, let it be a room here visible to the lizard. It will not be the full 5-point perspective, it will be the portion of it that will be visible to the lizard. We'll draw it also. In my class, I have done it for my students. I'll take it on a separate sheet. Okay? But remember, only this much portion will be visible. That will be a part of the full 5-point perspective. Now this thing I'll enlarge. Let me first of all make the this is a bed, this is a table and a chair here. Now we derive this much of portion on our sheet. Saharsh is asking, is 5-point perspective asked in the examination? I generally do not give a comment, is it going to be asked or not? Because NID is most unexpected kind of set of question. Anything which was not asked in previous years will be
a part that will be asked this year. So previous year question only give you a kind of a practice onto what was asked, or take you to the level of difficulty level of the previous years. But this year the answer will be, or the question would be different. So no one can claim that this year they won't ask anything on 5-point perspective. They may ask. Okay, coming back to this and explaining this. This is the floor of the room which the wall lizard will see. Could you get it? This one is getting enlarged now. Do you get some idea as to how the question would be answered? Seven feet is the door, 5 feet 6 inches is the person, the lady coming here.
So one way instead of discussing from other points, could you tell me if this is what you have understood fairly well? Wall lizard view of a room.
Now the scene created here is that it is 10 p.m. in 10 past 10 p.m. in the night and you are studying and your mother has brought in a glass of milk along with couple of biscuits for you to get refreshed and continue your study. And this is your room from the point of view of a wall lizard. लिजार्ड के भी कुछ पोर्शन बताएंगे क्या? आई थिंक आई हैव टेकन एन ओरिएंटेशन वेयर no part of the lizard is visible. Still, if you like, you can have a little portion of this wall visible, shift the whole thing here, and then make one of the leg of the wall lizard clearly visible in an enlarged form, like this. At one of the corners, like this. There was a little discussion among you all that उसका part कुछ दिखेगा या नहीं. You all are right because it's wall, it is the lizard which is looking down. तो उसका मोस्टली पोर्शन नहीं दिखेगा एक्सेप्ट कि अगर उसके कुछ डिजिट फैलेंजेस दिखते होंगे. तो देखिए मैंने मेरे हाथ दिखाए ना, इतना बड़ा आपको उसको दिखाना होगा, प्रोवाइडेड वो वॉल का पोर्शन आपने लिया है या नहीं. एग्जैक्टली इस रेशियो में वो दिखेगा. डू यू गेट मी? ये भी छोटा बना है, इससे भी बड़ा बनेगा. चलो, तो मैं तो आया था ओरिजिनली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने के लिए. ये वॉल लिजार्ड का क्वेश्चन एज एन इंसेंटिव मैंने बता दिया और उसमें ह्यूमन फिगर भी डाल दिए जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा. ओके, इफ आई हैड टाइम आई वुड हैव डन इट मोर फेयर. I hope you all liked it. One important point I would like to mention here. Any animal, for example fish, 5 point. Frog, 5 point. Lizard, 5 point.
but how much portion of it is visible? Here is the answer. You do not do all the 5 point visible on the paper. Left vanishing point, right vanishing point, zenith, nadir, but none is within this picture frame. The room is a cut part of the whole sphere, and that's what I have done here. None of the vanishing point will be visible. There's somebody who is saying, okay, Rani Kumari saying, सर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है. बार बार देखो रानी, इसको और इसको. ये पोर्शन मैंने यहाँ पे एनलार्ज करके बताया है. एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन फिगर डाल दिए. और भी समझना है, और भी देखना है, तो व्हाट यू कैन डू is join my course, fast track course. Enroll yourself on 6363286363. Now is the time. I think you have another class, so you can still send your question back to me. I will be with you on 28th again and try to give you more insight of the sketches, particularly with the point of view of previous year question PYQs. Right, friends? And I thank you very much, Pragya, for saying that, sir, thank you so much. ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम से डिस्टर्ब कर रहा था, and now you get the solution. So you are most welcome. You are most welcome to my class also. Do join me in my fast track that is going to be started very shortly. Bye bye for now. Don't leave. You got another class coming up. लास्ट में कॉम्प्लीमेंट देखो कितना बढ़ गया. ओके सर, थैंक यू सो मच. ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम से डिस्टर्ब कर रहा था.
हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्रिएटिव एज। आज की हमारी जो क्लास है दैट इज गोइंग टू बी जनरल अवेयरनेस सेंट्रिक। ठीक है, लास्ट वाली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने वर्बल एबिलिटी भी लिया था और जनरल अवेयरनेस भी लिया था, बट आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए वो वाला टॉपिक लिया गया है सिर्फ जनरल अवेयरनेस का। ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। आई नो कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द क्लास पीपल। गुड आफ्टरनून, आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग हाय, हेलो। Yes, hi, good afternoon, Hemant. Hello, diverse site. Hello. Let's start with the monuments. Okay. सबसे पहले तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ मॉन्यूमेंट्स। हम ऐसी मॉन्यूमेंट्स कर रहे हैं, इंडिया में बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स है, आई होप यू नो दैट। ठीक है, उनमें से कुछ तो हैं जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है। ओके, वी हैव 43 सच मॉन्यूमेंट्स। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक है, ऑल्दो डिटेल में उन मॉन्यूमेंट्स को डिस्कस नहीं किया था, बट यस, दिस वाज समथिंग दैट वी हैड डिस्कस्ड इन द क्लास। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू बी पिकिंग अप क्वेश्चंस जो दूसरे मॉन्यूमेंट्स पे आधारित है, इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे आधारित नहीं है। क्योंकि जब मैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करती हूँ तो आपको पता है कि कौन से 43 वो मॉन्यूमेंट्स हैं जो आपको करने हैं, राइट? तो आपको देखना है उनके बारे में। अगेन, द पिक्चर ऑफ दोज मॉन्यूमेंट्स, द ones that are listed in the UNESCO World Heritage List, then you have to see the location where they are at, as in समझ लीजिए हम लोगों ने बात की छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहाँ आता है, कौन सी स्टेट में, कौन सी सिटी में, ये आपको देखना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम यूनेस्को के लिस्ट में ये कब शामिल हुआ था, क्या हमें वो याद करना पड़ेगा साल? गाइस, इतने समय में मैंने नहीं देखा है कि देयर हैज बीन अ ईयर दैट हैज बीन आस्क्ड कि बताओ बच्चों के कौन से साल में इंक्लूड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में एक्स वाई जी मॉन्यूमेंट को। तो आई डोंट थिंक इट इज ऑफ दैट मच इंपॉर्टेंस, बट हाँ, लेट मी ब्रिंग इट टू योर नोटिस। एक स्टूडेंट ने ही आप में से मुझे बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो 1983 ऑनवर्ड्स यूनेस्को की लिस्ट बनना स्टार्ट हुई थी। तो 1985 में पहला मॉन्यूमेंट इंक्लूड किया गया था यूनेस्को की लिस्ट में। तो ऐसा था कि यूनेस्को की लिस्ट में 85 में ये मॉन्यूमेंट था, 86 में ABC मॉन्यूमेंट्स थे, 87 में ये मॉन्यूमेंट्स थे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्योंकि मैं क्रोनोलॉजिकली उसको याद करती हूँ तो मुझे याद करने में थोड़ा सा आसान हो जाता है, एंड इट हेल्प्स मी रिमेंबर दोज मॉन्यूमेंट्स ऑल्सो। साथ साथ में साल भी याद रह जाता है। ओके, तो अगर आप लोग साल याद करना चाहते हैं, ये एक ट्रिक है जो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, एंड होपफुली आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, शायद ना आए साल, बट अगर आ जाए तो आप लोगों को पता होगा। ऑलराइट, Shrishti is asking me, how are you, ma'am? I'm good, Shrishti. How are you doing, bete? I hope the preparations are going on well. Bhavya says, hi, ma'am. Hi, Bhavya. Hello, ma'am. Good afternoon. Yes, good afternoon to each one of you. Let's start with the monuments quickly then. आज जो monuments है, वो basically आपको किन किन चीजों का ध्यान देना है. You have to notice what other questions can also come related to the monuments. Okay? आप लोग चाहें तो नोटबुक लेके एक स्क्रीनशॉट ले लें या पिक्चर ले लें साथ साथ में। ठीक है, मेरे को लगता है कि दैट विल बी हेल्पफुल अगर आप नोट्स लें, क्योंकि जब हम लोग ये कर रहे होते हैं हमारी टेंडेंसी होती है टू, अच्छा हो गया, मैम ने नोट्स दे दिए, खत्म हो गया। बट व्हेन यू आर राइटिंग डाउन द नोट्स ऑन योर ओन, यू टेंड टू रिमेंबर मोर। ओके, सो वील स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट मॉन्यूमेंट पे आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं मेरे सामने, वेयर इज द एंशियंट मॉन्यूमेंट बटेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स सिचुएटेड लोकेटेड। तो एक ये तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकता है मॉन्यूमेंट से रिलेटेड, कि आपको जगह बताई गई हो, जगह पूछी गई हो कि ये कहाँ लोकेटेड है, या आपको एक पिक्चर दे सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि रिकॉग्नाइज दिस मॉन्यूमेंट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ XYZ। ओके, जरूरी नहीं है कि ये एक यूनेस्को साइट है, बट ये जरूरी है कि इंडिया में है तो आपसे पूछा जाए, राइट?
So right answer to this is that I'm sorry. The correct answer to this is that the Bateshwar temple complex is situated at Madhya Pradesh. A little bit of info that I would like to give you related to this is that they are a group of almost 200 Hindu temples. All right, they are all dedicated to Lord Shiva, Vishnu, Devi, and various other gods. They were built during the Gurjar Pratihara's reign in the Nagara temple architecture in the Chambal Valley in the district of Morena. So what I wanted to tell you, सारी वो चीजें यहाँ पर दी गई हैं. वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये किस स्टेट में लोकेटेड है, फोटो देख के. वो आपको ये बोल सकते हैं कि ये कौन से टाइप के टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है. या आपको दिया जा सकता है कि ये बटेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर किस टाइप के टेम्पल आर्किटेक्चर को देखा जा सकता है, right? Or there might be a question that says that the Gurjar Pratiharas, or sorry, who were the dynasty to build the famous Bateshwar temple complex? So do remember guys, हमसे related question क्या क्या आ सकता है. हम एक डिजाइन और आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हैं. हमसे रिलेटेड क्वेश्चन ये आ सकता है कि उसकी लोकेशन क्या है, कैसा दिखता है, क्या टाइप का आर्किटेक्चर है, या किस डायनेस्टी ने इसको बनाया है, राइट? आपसे ये नहीं पूछा जाएगा किस सन में इसको बनाया गया था, which year was it made or which century was it made. Okay, that is too detailed a question for us as students. The second question you can see is the Sun Temple at Konark is famous for its shape resembling a chariot, palace, a ship, or a lotus. I'm sure that you can see behind me the famous Sun Temple. Guys, ये हम लोग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी करेंगे अगर होगा तो, because it is a UNESCO World Heritage Site. Okay, the correct answer to this is it resembles a chariot. All right, there are 7 horses in the front of the temple that show that they are pulling the chariot of the sun god. सूर्य देव का जो मंदिर है ये उसके लिए है. कोणार्क मतलब कोन is the angle and arc means the sun itself. Okay, so this is what the temple is about and chariot के shape में है. And let's go on ahead and read some more info about the Konark Sun Temple. It is present in the Puri district of Odisha, dedicated to the sun god, and was made by Narsingh Dev I in Kaling architecture. Guys, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना इसको वो करना चाहिए था, right? Underline करना चाहिए था. Oh, I'm sorry. In Kaling architecture, and what is depicted? It is depicted on the 10 rupee note. I'm sorry, it's not depicted on the 10 rupee note, guys. The Konark Sun Temple. Yes, sorry. The Konark Sun Temple is depicted on the 10 rupee note to show its importance to the national heritage. Okay. एक और क्वेश्चन जो इससे ही उठ के आ रहा है बट इससे पर्टेनिंग नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है ओडिशा. कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि ओडिशा का कैपिटल क्या है? फटाफट चैट बॉक्स में बताइए, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का. ओके, ठीक है, चलो, इनफ टाइम गिवन. व्हाट आई वांटेड टू से इज, किसी ने चैट में लिखा है कि मैम बट इट लुक्स लाइक अ पैलेस. अगर आप लोग पुरानी पिक्चर फिर से देखेंगे एक बार तो आपको रियलाइज होगा कि इसके इर्द गिर्द ये व्हील्स बने हुए हैं. आई होप यू कैन सी दीज व्हील्स, राइट? सो दीज व्हील्स show there are 24 wheels across in the entire from the one side of the temple to the other. That shows that it has been built like a chariot. The 7 horses that are in the front depict the 7 days of the week, and they are shown pulling. That is what it signifies, the chariot being pulled by those horses. Okay.
बहुत सारे लोगों ने जवाब भी दे दिया है, भुवनेश्वर, दैट्स द कैपिटल ऑफ ओडिशा। थैंक यू सो मच गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। The next question is in front of you. The Martand Sun Temple in Jammu and Kashmir is primarily dedicated to which deity? So, which deity is also important? हमने देखा था कि बटेश्वर टेम्पल जो है वो वहां पर मल्टीपल गॉड्स की मूर्तियां देखने को मिलती हैं, बट जो कोणार्क सन टेम्पल है वहां पर सिर्फ सन गॉड को डेडिकेट किया हुआ है वो टेम्पल। ओके, उसी तरीके से मार्तंड सन टेम्पल जो है, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को इसमें से आंसर मिल गया होगा। अगर नहीं मिला तो बहुत बुद्धू हो आप लोग, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ऑलराइट, सो द मार्तंड सन टेम्पल इज डेडिकेटेड टू सूर्या द सन गॉड। गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है द मार्तंड सन टेम्पल। ओके, let's see a little bit more info about the Martand Sun Temple. So basically, this is located near the Anantnag district of Jammu and Kashmir. It was built by King Lalitaditya Muktapida of the Karkota dynasty. It is a unique fusion of Gandhara architectural style and dedicated to Surya, the sun god, also known as Martand. तो सूर्य जी, सूर्य सन गॉड का अलग दूसरा नाम है मार्तंड। ओके, एंड गंधारा टाइप का आर्किटेक्चरल स्टाइल देखने को मिलता है। यहाँ पर अभी आप सिर्फ ruins देख सकते हैं, but yes, you need to remember the picture of what the temple looks like. Let me just give you a little bit of brief information regarding this. औरंगजेब ने जब जब औरंगजेब came into the country, I mean when the Mughals were ruling India, औरंगजेब्स army was the one जिसने इस सन टेम्पल को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। ओके, शायद इस चीज से आप लोगों को याद रह जाए। ओके, तो छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अरे कि वो कौन सा टेम्पल था जम्मू कश्मीर में जिसको औरंगजेब की आर्मी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था? मार्तंड सन टेम्पल, राइट। सो देन दैट इज हाउ यू कैन रिकलेक्ट कि ये अनंतनाग में लोकेटेड है या ये सन गॉड को डेडिकेटेड है, and so on so forth. Okay, coming to the next question, the Masroor rock cut temples are an example of monolithic temples. Guys, मोनोलिथिक में फिर से एक बार मैं समझाना चाहती हूँ, मोनोलिथिक का मतलब होता है मेड ऑफ वन रॉक। Okay, so this is an entire set of temples that has been made using one single rock. All right, so they are an example of temples located in which state? They are located in the state of Himachal Pradesh. Okay, moving on, there is some more information given here. The the Masroor temples or rock cut temples at Masroor is an early 8th century complex of rock cut Hindu temples in the Kangra Valley of Beas River in Himachal Pradesh, India. The temples face northeast towards the Dhauladhar range of the Himalayas and have Nagara architecture. Guys, जो जो चीजें हमारे लिए important हैं वो चीजें मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ, सो दैट यू रिमेंबर एंड रिकलेक्ट क्या चीज हमें पढ़नी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज द विक्टोरिया मेमोरियल बिल्ट इन व्हाइट मार्बल इज लोकेटेड इन, इज इट मुंबई, कोलकाता, पुडुचेरी और बेंगलुरु? सो लेट्स सी अ पिक्चर ऑफ द विक्टोरिया मेमोरियल ऑल्सो. And if I ask you or if there is a question that says कि विक्टोरियल मेमोरियल का क्या टाइप का आर्किटेक्चर है, क्या आप लोग बता पाएंगे क्या टाइप का आर्किटेक्चर है? यस, diverse site says ma'am I'm from Himachal. Lovely. Okay, nice to know that. चलिए आगे बढ़ते हैं। Victoria Memorial is located in Kolkata. The architect of Victoria Memorial was William Emerson. The design is in the Indo-Saracenic
style, mixing British and Mughal elements with Venetian, Egyptian, and Deccan architectural influence. So, guys, you need to remember these terms a little bit. अगर आप लोग specifically आर्किटेक्चर की तैयारी भी कर रहे हैं तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है, चांद बावड़ी वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेप वेल्स इज फाउंड इन, इज इट गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा? सो द करेक्ट आंसर, ओ प्लीज सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये स्टेप वेल्स हैं जो इंडिया में एक यूनिक आर्किटेक्चरल फॉर्म है। ठीक है, आपको स्टेप वेल्स इन द वर्ल्ड शायद और कहीं देखने को ना मिले। ठीक है, चाहे वो चांद बावड़ी हो या रानी की वाव हो, ये सारे स्टेप वेल्स का एग्जाम्पल है और ये हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। ओके, the correct answer to this is that Chand Bawdi is found in Rajasthan. चलिए यहाँ पर फटाफट से 4 स्टेट्स दी हुई हैं। आई वुड लव इट अगर आप लोग मुझे चैट बॉक्स में चारों स्टेट के कैपिटल्स बताएं। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रानी की वाव स्टेपवेल इज लोकेटेड इन विच टाउन? इज इट बूंदी, इज इट पटन, इज इट मोगदेरा और इज इट जूनागढ़? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। प्लीज हैव अ लुक एट द पिक्चर ऑफ द स्टेपवेल ऑफ कॉल्ड रानी की वाव। ऑलराइट, अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था कि रानी की वाव इज ऑल्सो अ स्टेपवेल, जिस तरीके से Chand Bawdi is a stepwell. Okay, so Rani Ki Vav is located in Patan in the state of Gujarat, guys. Okay, Shrishti has been giving me answers. Gandhinagar is the capital of Gujarat. Lovely. Lucknow is the capital of कौन सी स्टेट, कौन सा कैपिटल है, किसका कैपिटल है लखनऊ मैम? उत्तर प्रदेश। ओके सॉरी, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड एक और राजस्थान का कैपिटल नहीं लिखा आपने बेटा सृष्टि? ओके, हेमंत ने लिख लिया यहाँ पर, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। थैंक यू गाइस, ये इससे पर्टेनिंग कुछ नहीं है, बट हाँ ये देखा गया है कि एनआईडी में या यूसीड में दोनों में कैपिटल्स पूछे जाते हैं, चाहे कैपिटल्स हो चाहे सोब्रिक्वेट्स हो। डू यू नो व्हाट सोब्रिक्वेट्स आर पीपल? डू वी नो व्हाट सोब्रिक्वेट्स आर? ओके, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू ब्रीफली। जब हम एक सिटी को एक अलग नाम से बुलाते हैं, एक ऐसे नाम से जो उसको सिग्निफाई करता है, तो उसे सोब्रिक्वेट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हैदराबाद इज नोन एज द सिटी ऑफ नवाब्स। ठीक है, Udaipur is known as the city of palaces, right? And Mumbai is known as the city of dreams. Okay? तो एक ऐसा नाम जिससे उस चीज वहां को, उस जगह को सिग्निफिकेंस मिलता है, वैसा नाम इज नोन एज अ सोब्रिक्वेट। ओके, तो यस, नाउ यू गाइज नो, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। ऑल्सो कैपिटल्स भी पूछे जाते हैं, तो कैपिटल्स याद करना कंपलसरी है। ओके, ठीक है, यहाँ पर तो इजी वाले स्टेट्स थे इसलिए आप लोगों ने फटाफट कैपिटल्स दे दिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे नॉर्थ ईस्ट के कैपिटल्स पूछने वाली हूँ, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यू कैन सी, सांची स्तूपा वाज बिल्ट बाय व्हिच एम्परर? वाज इट चंद्रगुप्त मौर्य, वाज इट हर्षा, वाज इट समुद्रगुप्ता और वाज इट अशोका? The correct answer to this, I hope you can see the Sanchi Stupa behind me. Oh guys, just let me remind you one more thing. एक एग्जाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो शायद आर्किटेक्चर का एग्जाम था, बट आई थिंक एक एग्जाम में ये पूछा गया था, नो इट वाज द एनआईडी ओनली, जिसमें पूछा गया था कि हर्मिका उसका कौन सा पार्ट होता है, स्तूपा का कौन सा पार्ट होता है। तो अगर आप देखें तो ये
अंडाकार शेप के ऊपर एक स्क्वायर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आपको यहां से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर अभी ये जो डोर का एंट्रेंस है वो आ गया है, बट इसके पीछे वैसे एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, उसको हर्मिका बोला जाता है, ठीक है। सो just to let you guys know, okay, by the way, you know what is this door called? This door is called the toran. Okay, so you know the stupa also has particular jargon, उसके नाम है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने मुगल आर्किटेक्चर में कुछ पढ़ा है स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, उसी तरीके से बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में भी प्रोबेबली देयर मस्ट बी अ टर्मिनोलॉजी एंड दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी देखे गए हैं। नाउ आई एम नॉट टू श्योर इफ आई हैव सीन इट इन द एनआईडी और इफ आई हैव सीन इट इन वन ऑफ द आर्किटेक्चर एग्जाम्स, बट जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, मुझे लगता है एनआईडी में ही देखा था। Toranwal is what Pragya is saying. Yes, thank you, Pragya. Thank you so much. So moving on to the answer for this question. Sorry, it is the great king Ashoka. He was the one responsible for building the stupa. Okay, कुछ information उससे related यहाँ पर नीचे दी गई है. It is a complex of Buddhist monuments in Madhya Pradesh in India. कहाँ पर प्रेजेंट है मध्य प्रदेश में? कैन एनीबडी टेल मी? यस, चैट बॉक्स में जवाब दीजिए फटाफट से अगर किसी को पता हो कि मध्य प्रदेश में कहाँ प्रेजेंट है सांची के स्तूपा। देन it was commissioned by Emperor Ashoka in the 3rd century BCE, and it is a simple brick structure built on the relics of Buddha. So when I say relics of Buddha, do you know what that word means? Do we know what relics of the Buddha mean? इसका भी जवाब आप लोग मुझे चैट बॉक्स में देंगे कि क्या होता है relics of Buddha. भोपाल में प्रेजेंट है, सांची में प्रेजेंट है, ओके, लवली लवली, भोपाल में, ओके, ग्रेट, नाइस, लवली। चलिए, तो अब मुझे नेक्स्ट बताइए कि रेलिक्स क्या होता है। ओके, एंड सांची स्तूपा जो है इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। The Maluti temples in Jharkhand are especially famous for which of the following characteristics? They are built entirely of sandstone with Indo-Islamic architectural style. They are a cluster of over 70 terracotta temples constructed by local zamindars. They were carved out of a single rock during the Mauryan period, or they feature Dravidian style gopurams and large stone chariots. So the correct answer to this is that they are a collection or a cluster of over 70 terracotta temples. Terracotta हम लोगों ने सिर्फ छत के लिए सुना है, राइट? आप लोग जानते होंगे जो हमारी जो खपरेल होती है, that is known as terracotta. Okay, but yes, they were terracotta temples made by the local zamindars. Please have a look at the Maluti temples, guys, and also read a little bit of information related to it. So they are a group of, 72 terracotta temples located in the village of Maluti in the Dumka district of Jharkhand, India, built between the 17th and 19th centuries by Baj Basanta dynasty. These structures are unique for their intricate terracotta carvings that depict mythological tales from the Mahabharata and the Ramayana, as well as scenes from daily life. The site is considered one of the most endangered site. Guys, वो नीचे छुप गया है, but वहां पे लिखा हुआ है that it is considered to be one of the most endangered site. You have heard of endangered species, animals, endangered site इसलिए क्योंकि इस खतरा है कि ये विलुप्त हो जाएगी. We will never be able to see a terracotta. I think ये पहली बार है actually
जब हम टेराकोटा का बना हुआ टेम्पल सुन रहे हैं? Next question in front of you is, people, the Unakoti rock carvings are primarily found in Mizoram, Tripura, Assam, or Nagaland. The correct answer to this is they are found in Tripura. All right. What do we know about the Unakoti temples? The Unakoti or the Subrai Khung is a sculptural emblem, an ancient Shaivite place that hosts rock carvings, figures, and images of gods and goddesses. The bas relief. What do I mean by bas relief? People, I can see that some of you are paying. Ma'am, somebody's asking me. Yes, sorry. Somebody is telling me about relics. Yes, relics are the body parts, dead body parts, or part of a deceased holy person, or the belongings of that person that are kept for reverence. Yes, बिल्कुल ठीक लिखा है. कौन है ये जिसने ये लिखा है? अंशिका. थैंक यू अंशिका. यस, एकदम अप्रोप्रिएट वर्ड दिया है आपने, सेंटेंस दिया है आपने, मीनिंग दिया है आपने relics का. फिर किसी ने मुझसे पूछा है, मैम आई यू फ्रॉम? नो बेटे, आई एम नॉट फ्रॉम एनआईडी, आई एम फ्रॉम क्रिएटिव एज, गाइस, कम ऑन. Then somebody is asking me, this session is mainly for NID? No beta, it is for NID UCEED, all such exams. See darlings, I want to just bring to your notice that GK is something that comes in every exam. Okay, so this may be a topic that might be specific to an any XYZ exam, but here I have picked a topic which comes in all exams. Why? Because you all are design and architecture students. So monuments are something that show how the art and culture of our country has evolved. Okay, so there will be questions based on art and culture, monuments pe based, that come in every GK exam, be it whichever exam you are giving. Okay, so no, it is not GK NID specific, it is all exam specific. सबसे important topic जो मुझे लगता है, I think one of the important topics है monuments. Okay. Rishit says, hello ma'am. Hi Rishit. Endangered sites as in poor condition. Not poor condition, but विलुप्त होने की कगार पे, खत्म हो जाने की कगार पे. क्या बोलते हैं, और क्या वर्ड यूज कर सकती हूँ मैं इसके लिए? I don't know what other word I can use here. Okay, but yes. एक और वर्ड मैंने आपसे पूछा था, bas relief. ठीक है, so what is bas relief, people? जब कार्विंग सीधे वॉल के फसाड पे की हुई हो, ठीक है, पत्थर के फेस पे की हुई हो कार्विंग्स, उसको बास रिलीफ बोला जाता है. ठीक है, जैसे आपने अभी अभी कुछ देर पहले इसके पहले वाले स्लाइड में अगर हमने देखा, यस, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सीधे उसके वॉल पे की हुई है, राइट? ये कार्विंग्स की हुई है. दिस काइंड ऑफ वर्क इज नोन एज बास रिलीफ. इंडिया में हमें बास रिलीफ और कहाँ देखने को मिलता है? अगर आप लोगों ने महाबलीपुरम के बारे में सुना है, which is in Tamil Nadu, here you can see monuments which are made of bas relief as well. All right, the descent of the Ganga is by far one of the largest bas reliefs that you will see in Mahabalipuram and in the country as well. Okay, let's go on ahead. The next question that you can see is, which monument is known as the mini Khajuraho of Madhya Pradesh? Is it the Udaygiri caves? Is it the Bateshwar temple complex, the Chausat Yogini temple at Beda Ghat, or is it the Bhojeshwar temple? So guys, the correct answer to this is that the Chausat Yogini temple at Beda Ghat
is also known as the mini खजुराहो. तो मिनी खजुराहो जो है वो क्या है इसका? सोब्रिक्वेट, AKA हम बोलते हैं ना, also known as, ठीक है, that's what a sobriquet means. Okay. uh somebody else says, Saharsh says hi Saharsh, nice to see you bete. Nice to see you present here. Yes, this is the Chausat Yogini temple, guys. A little bit of info regarding the Chausat Yogini temple. It is called the Golki Mutt, one of India's Yogini temples. Guys, do remember that we have as many as 64 yoginis. Okay. So yoginis, again, I will not deter from the topic. Yoginis is something which you all can always look up इन माइथोलॉजी और आपको समझ आ जाएगा कि क्या होता है. ठीक है, बट यहाँ पर 81 योगिनीज की श्राइन है 64 के जगह पर. ओके, इट वाज बिल्ट बाय द कालाचूरी किंगडम and has a distinct resemblance to the temples of Khajuraho in structure. All right, the temple is the abode of goddess Durga along with 64 yoginis. एक और क्वेश्चन जो यहाँ पर देखकर मुझे याद आया कि इसी के तर्ज पर एक मॉडर्न गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाई गई थी और वो बिल्डिंग थी हमारी इंडियन पार्लियामेंट हाउस. आई एम श्योर आप लोग सब जानते हैं कि अभी जो हमारा पार्लियामेंट हाउस है, जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है, वो ट्रायंगुलर शेप में है. उसके पहले जो पार्लियामेंट हाउस था वो जो है वो इसके तर्ज पर बनाया गया था. इट वाज बेस्ड और इट वाज टेकन, आई मीन द चौसठ योगिनी टेम्पल वाज एन इंस्पिरेशन टू द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस ऑफ आवर कंट्री. ओके, लेट्स मूव ऑन अहेड पीपल. The next question that you can see is the 216 feet statue of Ahimsa is located in Maharashtra, Uttar Pradesh, Bihar, or Rajasthan. So the correct answer to this is, guys, it is located in Maharashtra. And where in Maharashtra can we see this? So yes, the statue of Ahimsa is a 108-foot tall Jain statue located in the Mangitungi Hills in Nasik in Maharashtra. All right. It is the world's tallest Jain idol as certified by the Guinness World Records and depicts the first Jain Tirthankara, which is Adinath. Okay. The statue was carved from a single rock in 216 and symbolizes the Jain principles of peace and non-violence. All right, do remember that. तो कुछ छोटे छोटे से स्निपेट्स हैं गाइस, वो मैंने कोशिश करी है कि मैं इसमें ऐड करूं जिससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, तो स्टैचू ऑफ अहिंसा आएगा ही आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट अगर स्टैचू ऑफ अहिंसा आता है तो आपको पता है कि ये कहाँ है, किसने बनाया है, किसका स्टैचू है, और उसके बारे में कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन. ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. The next question that you can see behind me is the 0 megaliths belong to which state? Is it the Arunachal Pradesh? Is it Manipur? Is it Meghalaya? And is it Mizoram? अब जो मेरे पीछे चारों स्टेट्स हैं, आपको उन चारों के कैपिटल्स देने हैं. All right, I'm waiting. Give me in the order only. We'll go ahead with the question. But ये मैं वेट कर रही थी, बहुत शैतान है ना तुम लोग, सब लोग फटाफट कैपिटल्स दे रहे थे, तो अब मुझे देखना है कि ये कैपिटल्स आते हैं कि नहीं आप लोगों को. ओके, तो सबसे पहली बात तो अगर आप 0 के मेगालिथ्स देखें तो आपका ध्यान जाएगा दैट दे आर अ सीरीज ऑफ रॉक्स दैट आर अरेंज्ड यू नो इन अ हॉरिजॉन्टल वे. तो आई डोंट नो कि ये खड़े किए गए हैं कि नेचुरली वहां पे प्रेजेंट हैं, बट let's see. So the correct answer to this is that they are present in Arunachal Pradesh. Okay.
मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का। चलिए जवाब दीजिए, जितने लोग जवाब दे सकते हैं कि कौन से स्टेट्स हैं और कौन से स्टेट्स की कैपिटल्स क्या हैं। ठीक है, शनिवार वाड़ा as shown in the image was originally built as a seat of which historical power in India? I hope you all can see the picture of the शनिवार वाड़ा guys. ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है पिक्चर? बहुत ही बढ़िया. So the correct answer to this is that it was built by the Maratha Peshwas. ठीक है, तो पेशवास के रूल में बाजीराव वन के लिए बनाया गया था शनिवार वाड़ा. ओके, आई एम ऑल्सो एबल टू सी कि आप लोगों ने यहाँ पर जवाब देना स्टार्ट कर दिया है. ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश. इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ, इम्फाल किसका कैपिटल है गाइस? सेकेंड स्टेट कौन सा था? शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय एंड एजवाल is the capital of this thing. Okay, lovely. Hi, ma'am. Banana monster this side from Creative Edge. Oh, lovely. Nice to see you. Great. Okay. The Gyaraspur temples are especially known for which architectural style? ठीक है, तो आप मेरे पीछे ग्यारसपुर टेम्पल्स देख सकते हैं. साथ साथ में 4 अलग अलग टेम्पल आर्किटेक्चर की स्टाइल्स भी दी गई हैं यहाँ पर. देखते हैं एक बार. ड्रेविडियन आर्किटेक्चर वो आर्किटेक्चर है जो हमें सदर्न इंडिया में देखने को मिलता है. नगारा आर्किटेक्चर ऐसा टेम्पल आर्किटेक्चर है जो हमें नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिलता है. इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आपको मुगल एरियाज में देखने को मिलेगा, जहां पर मुगलों ने रूल किया है. उस तरीके की जो बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स हैं वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा. बुद्धिस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर, ऑफ कोर्स जहां पर स्तूपास है या जहां पे बुद्धिस्ट मंक्स रहते थे जिन्होंने केव्स एस्टैब्लिश किए, तो वहां के आर्किटेक्चर को बोला जाता है बुद्धिस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर. ओके, जैसे हमें अजंता केव्स में देखने को मिलता है. ऑल राइट. द्रविडियन आर्किटेक्चर की अगर हम बात, सॉरी, द्रविडियन और नगारा आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, इसके अलावा हमें वेसारा आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है टेम्पल्स में along the belt of the Deccan when the north and the south mixed together. That became the Vesara kind of architecture. Okay, specifically in the Pattadkal monuments which was built by the Marathas, you can see Vesara kind of architecture. Aryan is asking me, is it, hi Aryan, relevant for UCEED? Yes, Aryan, it is relevant for UCEED. Guys, again, I think Aryan has joined us late, but मैंने ये पहले भी कन्वे किया था आप लोगों को कि जीके जो है, आप एक डिजाइन और आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हो, तो आपसे पर्टेनिंग क्या क्या चीजें जीके के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हैं. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा अपन. We'll see the next question. Sorry, the answer to the Gyaraspur temples. It is the Nagara kind of architecture. Dravidian architecture में अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो गोपुरम्स are very large. गोपुरम्स में कहने का मतलब है the entrance doors. Okay. बट अगर हम नगारा आर्किटेक्चर की बात करें तो सबसे बड़ी जो पीक होती है वो मेन क्या बोलते हैं गर्भगृह के ऊपर होती है. ठीक है, वो टॉलेस्ट पीक होती है एंड दैट इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द नगारा आर्किटेक्चर. The next question that you can see is the Lipakshi temple is especially famous for which unique architectural feature? Is it its underground sanctum, a large stone chariot carved from a single rock, the hanging pillar that does not fully touch the ground, the circular Dravidian style Gopuram? So the correct answer to this is the hanging pillar that does not fully touch the ground. Guys, मुझे आप लोगों से एक आंसर चाहिए.
ये लिपाक्षी टेम्पल जो है ये कहाँ सिचुएटेड है, ये आप लोग मुझे बताओगे. ओके, आई एम नॉट मूविंग अहेड एंड आई वांट यू टू टेल मी वेयर द लिपाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड. यस. रानी कुलकर्णी इज आस्किंग मी, मैम ये रिकॉर्ड वीडियो भी रहेगा ना? रानी मुझे नहीं पता बेटा, मैं आपको मे बी क्रिएटिव एज से कोई जवाब दे देगा आपको इसमें कि वो लोग ये इसका diverse site says yes Rani after the session ends. Okay, here's your answer Rani, thank you. So I did not know the answer but diverse site को thank you बोलना पड़ेगा, उन्होंने जवाब दे दिया है हमारे लिए. आंध्र प्रदेश is what Aryan Kira says. आर्यन किसके लिए बता रहे हो आप ये? Are you telling us for the Lipakshi temple? Yes? Okay, चलिए बढ़िया. So the hanging pillar, that is an important uh, standout point of the Lipakshi temple. ठीक है? It is also known as the Aks Stambh. The vibrant frescoes are another important thing. The temple is adorned with stunning, colorful frescoes that depict mythological stories. Okay, then you have intricate carvings on the walls which show the craftsmanship of the Vijayanagar era. All right, Ramayana connection, it says that Lipakshi means a rise bird and it is derived from the word when the divine bird Jatayu fell after being wounded by Ravana. Okay, and hence the name Lipakshi. Okay, the monolithic Nandi, which is the Nandi, the ride of Shivji himself, उस उनका जो राइड है जो उनके मंदिर के बाहर आपको प्रेजेंट मिलते हैं, that carved from one rock. So it is a very large monument of Nandi that you can see. It includes a massive monolithic sculpture of Nandi. ठीक है? And yes, that is also present at the Lipakshi temple. And Andhra Pradesh जो जवाब दिया साइंस स्नैप्स ने और आर्यन कीरा ने और सहर्ष ने और पता नहीं किसने, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है. यस, आंध्र प्रदेश इज द प्लेस वेयर द लिपाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड. तो हो सकता है आपको सॉब्रिक्वेट आए, नेम द टेम्पल दैट इज नोन एज द टेम्पल ऑफ द फ्लोटिंग पिलर, और आपको आंसर देना हो कि कौन सा टेम्पल है. ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा कि क्या खास बात थी लिपाक्षी टेम्पल की. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं. द अहोम राजा's palace, historically associated with the Ahom dynasty of Assam, is particularly known for which architectural feature? Is it the seven-storied stone tower built in Mughal style? Is it an extensive network of underground tunnels and secret passages? A floating platform constructed on the Brahmaputra River? Or is it a circular palace complex carved entirely from granite? What is the answer of the four? The correct answer to this, guys, is an extensive network of underground tunnels and secret passages. Guys, before we move ahead, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अहोम डायनेस्टी का नाम कुछ समय पहले मैंने यूनेस्को से रिलेटेड कुछ मॉन्यूमेंट में भी सुना था. क्या आप लोग जानते हैं कि वो कौन सा मॉन्यूमेंट है जिसको यूनेस्को साइट में इंक्लूड किया गया है जो अहोम डायनेस्टी को बिलोंग करता है? अगर आप लोग जानते हैं तो इसका जवाब दीजिएगा. ओके, नेक्स्ट you can see behind me is the Jinji Fort. Okay, what is Jinji Fort also known as? Is it known as the Red Fort of the South, the Troy of East, the Desert Citadel, or the Seven Pagoda? All right, the correct answer for this is it is known as the Troy of the East. So Jinji was a place जहां से अगर
एंटर करते हैं तो पूरे मराठा साम्राज्य में एंट्रेंस मिल जाता था, ठीक है। तो उसको ट्रॉय इसीलिए बोला जाता था कि जितना वेल ट्रॉय को प्रोटेक्ट किया गया था उसी तरीके से जिंजी फोर्ट को प्रोटेक्ट किया जाता था, ओके। एंड दैट इज व्हाई इट वाज नोन एज द ट्रॉय ऑफ द ईस्ट। कुछ कुछ लोगों ने जवाब देना चालू कर दिया है। आर्यन, मैंने देखा आपका जवाब, बट मैं रुकी हूँ। और भी कोई अगर जानता है कि क्यों ये यूनेस्को साइट में क्या अहोम डायनेस्टी का क्या इम्पोर्टेंस है, तो आई वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स मोर और वन क्वेश्चन मोर before giving the answer to this. The next question that you can read is the Dolavira ruins, a major site of Indus Valley civilization located in Gujarat, are especially known for which distinctive feature? They are the earliest known step wells in India. They have an advanced water conservation and reservoir system. They have the largest metal working workshop of the Harappa, or they have a circular citadel unique to the site. So the correct answer to this is, people, that they have an advanced water conservation and reservoir system. याद रखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने प्रॉपर प्लान्ड कंस्ट्रक्शन के लिए जानी जाती है। ना ही यहाँ पर सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ पर प्रॉपर वाटर कंजर्वेशन वगैरह भी प्रॉपरली किया गया था। सो देन जब इंडिया में या जब वर्ल्ड में ये सब चीजें नहीं थी, तब हड़प्पा मोहनजोदारो जैसी जगहों पर आपको ये देखने को मिलता था, ठीक है। The next question in front of you is the Hundru Falls rock shelter is located in which state? Is it Odisha? Is it Chhattisgarh? Is it Jharkhand? Or is it Uttar Pradesh? So people, the correct answer to this is Jharkhand. Can anybody quickly tell me what is the capital of Jharkhand? Everybody? Yes? Should I wait or should I move ahead? I think we can move ahead. Jharkhand is the answer. Yes. आप लोग मुझे बता सकते हैं? I think पीकू शो शॉर्ट्स ने गलत जवाब दिया है. It's not B. And झारखंड की कैपिटल है रांची. Thank you. Yes, it is C. आगे बढ़ते हैं. The Thotlakonda Buddhist complex located near Vishakhapatnam is primarily known for which of the following? Is it known for its rock-cut Jain caves, large monolithic pillars, ancient Buddhist monastery overlooking the sea, or its underground Shivlingam shrine? Okay, तो थोटलाकोंडा बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स जो है, ये शायद मैंने आज से, आप लोगों ने भी आई डोंट थिंक आज से पहले सुना होगा नाम. तो द रीजन दैट वी आर डूइंग दिस टुडे इज बिकॉज बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया में जिनको शायद यूनेस्को ने थप्पा नहीं दिया है, but they still mystify us, they still remain beautiful, and we should still be proud of the heritage called India, right? And the answer to this is that it is an ancient monastery that overlooks the sea. Okay, so can you guys tell me कि उस तरफ कौन सी sea आती है that it overlooks? Yes? चलिए चैट बॉक्स में अपना जवाब दीजिएगा, कौन सी सी आती है जहां पर दैट इट ओवरलुक्स द थोटलकोटी monastery. Okay, the Fatehpur Sikri Band Darwaza was built by Akbar, Aurangzeb, Shah Jahan और जहांगीर, राइट? तो गाइस सबसे पहले तो मुझे बताइए कि फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा जो है ये कहाँ है? ये प्रेजेंट है आगरा में.
क्या टाइप का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है यहाँ पर आपको? यहाँ पर मुगल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। ऑलराइट, ये याद रखिएगा। किस तरह के मटेरियल से बनाया गया है? ये रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। ओके, सो फतेहपुर सिकरी एंड बुलंद दरवाजा. Fatehpur Sikri was one of the first planned city of the Mughals, guys, and Buland Darwaza was the a part of that city. Okay, तो इसको बनाने वाले हैं अकबर, ठीक है, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, and you can see a lot of mixed heritage, uh, uh, क्या बोलते हैं, kind of architecture here, because Akbar had a Rajput wife, a queen for his wife. So you can see the influence of a lot of Rajasthani architecture also on the buildings that have been made post Akbar. Okay, like while Akbar was the king, and so on and so forth. ठीक है? यस, सहर्ष ने सही जवाब दिया है। बे ऑफ बंगाल है वो जगह जहां पर द थोटल कोट मोनेस्ट्री ओवरलुक करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं पीपल। द बड़ा इमामबाड़ा इन लखनऊ, built by Nawab Asaf-ud-Daula in 1784, is especially famous for which architectural feature? Is it famous for its gold plated central dome? Is it famous for the world's largest arched hall constructed without beams? Is it famous for a stone minaret that changes color with sunlight? Or is it famous for the underground rock cut Buddhist chambers? So the correct answer to this, people, is that it is famous for the arched hall constructed without beams. So, guys, this was the last question for the day. ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग कर सकते हैं मॉन्यूमेंट्स से रिलेटेड, स्पेशली वो वाले मॉन्यूमेंट्स जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हो। ठीक है, बट आज की क्लास के लिए मुझे स्पेसिफिकली नॉन यूनेस्को साइट वाले मॉन्यूमेंट्स लेने थे। वो इसलिए लेने थे क्योंकि यूनेस्को वाली चीजें, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, यूनेस्को वाले जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो 43 मॉन्यूमेंट्स, आप 43 भी नहीं, अब इस साल और बढ़ गए हैं। जो मराठा फोर्ट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है इन द लिस्ट, तो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूनेस्को दिस थिंग। तो जो जिंजी फोर्ट जो हमने देखा इस क्लास में, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूनेस्को लिस्ट नाउ। ओके, अर्लियर इट वॉजंट। ओके, वेल, इट वॉज फन टुडे। आज सिर्फ जीके की क्लास थी क्योंकि मुझे चाहिए था कि आप लोग फुल फ्लेजेडली थोड़ा सा जीके पे अटेंशन ज्यादा पे करें। ठीक है, अगली जो क्लास होगी हमारी वो हम लोग प्रोबेबली इंग्लिश की ले लेंगे, वर्बल एबिलिटी की ले लेंगे। ठीक है, एंड इट वाज एज यूजुअल वेरी नाइस इंटरैक्टिंग विथ यू, and I had a fun class. I hope you guys had fun too. On this note, I shall end the class here. Have a nice day, each one of you. God bless you all.